देखिए ओरिजिनल फर्स्ट क्लास कौन देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्ट्रीब्यूशन और जियोग्राफी of the India. Yeah. The origin origin of the full ଦି ପ୍ରକାର କହିଛି କ'ଣ ମିଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି ତା ଅରିଜିନ୍ ହେଲା ଇନସିଟୁ ହେଲା ଡ୍ରିଫ୍ଟେଡ୍ what is the meaning of drifted drifted କ'ଣ କହିବ driftation drifted means transport yes that is transport ତା meaning ହେଉଛି ତାର meaning ହେଉଛି କ'ଣ ଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଡିପୋଜିସନ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବୁଝିପାରିଲ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ପାଇବା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଇନ୍ ଇନସିଟ୍ କେସ୍ both formation and deposition in same insitu yes movement by the agent real activity movement by the agent okay ताମାନେ ଏବେ ମୋତେ କୁହ ଯଦି ଗୋଟେ ସପୋଜ ଇଟ୍ ହେଲା ଇନସିଟୁ and another is drifted ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କୋଉଟାରେ ଆମେ associated content ଅଧିକ ପାଇବା association other constraints association that is drifted ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ପଏଣ୍ଟଟା ତ ଇନସିଟୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ତୁମେ କହୁଛ ଇନହେରେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ମାନେ ଗୋଟାଇ ସେଥିଲାଗି ତ ହେଇଥିଲାଗି ମେନ୍ ସେଇଥିଲାଗି ତୁମେ ପଢ଼ିକି ଆଇଲ ଯେ ଇନସିଟୁ କୋଲ୍ସ ଆର୍ ମେନଲି ଲେସ୍ ମିନେରାଲ ମ୍ୟାଟର ଥାଏ ନାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମିନେରାଲ ମ୍ୟାଟର ସେ ତ ଅଧିକ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର କରିନି କଭର କରିଥିଲେ ତ ସିନା ପାଇଥାନ୍ତା ଡ୍ରିଫ୍ଟେଡ୍ କେସ୍ ଲେଖା ହେଇଯିବ ଇନସିଟୁ ଥିଓରି ସବୁ ଥିଓରି ଅରିଜିନ୍ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ାକ ଅରିଜିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୋଲ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଅରିଜିନ୍ ଥିଓରି ଇନସିଟୁ ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଫ୍ଟେଡ୍ ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଲ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଫର୍ମଡ୍ almost entirely from the terrestrial plant एटा plant material हुए तो जानछि ना नहीं पेपर लिखा है have been found almost entirely from the terrestrial देखा जो plant गुड़ा it appears that ना बाहर गुडू आसिकी माने planet होची it appears that in situ material grew and accumulated under conditions similar to those existing in modern pit deposit माने in situ condition माने जो फास्ट पिट डिपोजिट होची ना जो प्लांट मटेरियल बरियाल हबो एंड डिपोजिट हबो प्रथम कोन पिट डिपोजिट हबो पिट फॉर्मेशन हबो नहीं सॉइल पिट एगुड़ा सब सॉइल पिट गुड़ा से तो कहते पिट इज नॉट ए कोल इज सॉइल then accumulation of debris stops as a condition become unfavorable for growth or accumulation of the vegetation matter for one or more of the following causes केमती माने ये कर वेजिटेशन मटेरियल केमती accumulate होची वाटर केमती
तार लेवलटा बढ़ाऊँगी से पुणी बरियाल होता से कौन यहाँ प्रथम पॉइंट कौन ना फ्लडिंग एंड कवरिंग विथ ए सेडिमेंटरी कवर फास्ट आसला गोटे गोटे एरिया अच्छी जो कि वेजिटेशन मैटर अच्छा एंड सम सेडिमेंटरी रॉक अच्छी एंड से गुड़ाक फ्लडिंग हेले फ्लडिंग एंड कवरिंग बुझिपार तो से एरियाटा फ्लडिंग मैंने कौन है वाटर बुझल तो वेजिटेशन थिला वाटर माड़ीगला एरियाटा flooding and covering with a sedimentary cover and change of climate to extreme dryness or cold तार फास्ट कौन थिला गोटे एरिया थिला तापर वाटर फ्लडिंग हवा द्वारा मैंने फ्लडिंग हेल्ले कौन वाटर लेवल इनक्रीज कला सो दैट दिस एरियाज कौन हम वाटर सहित कौन हो कभर हो वाटर फुल हो गला धीरे धीरे कौन हम से एरियाटा तापर तार क्लाइमेट जो चेंजेस आसला वाटरटा रहा से जो प्लांट मटेरियल थिले ताकू कौन करेंगे से आउ कि मैंने अध यदि फ्लडिंग कवर हो गला कौन हम से भितर पानी भितर ही रहा ता भितर कौन है ना चेंज ऑफ द क्लाइमेट तापर क्लाइमेट चेंज है पुणी ड्राइनेस आसला तापर सडन स्टॉर्म ऑफ अ ग्रेट इंटेंसिटी कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ लिविंग मैटर एंड इरोजन और डिस्ट्रप्शन ऑफ द प्लांट डेब्रिज पुणी ड्यू टू द सम स्ट्रोम एक्टिविटी हवा द्वारा से कौन है प्लांट मैटर गुड़ा भांगीदेला ना नहीं एक्सट्रक्शन करदेला इरोजन करदेला किसी मटेरियल तो से गोटे जगार प्रोसेसटा कि और मेजर इनसिटू कोल डिपोजिट changes of the surface level of the land are necessary successfully repeated the favorable condition for the accumulation कौन सरफेस लेवल ये पॉइंटा कौन जिनसा बुझ से कौन कौन ना ये पॉइंटा पढ़ी लिखाई मेजर इनसिटू कोल फील्ड्स आर फॉर्म्ड इन ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम massive plant growing in swamps or in swamp inter interspersed with shallow lakes बुझला तो माने ता एटी कंडीशन गुड़ा शुण से कौन लेवल ऑफ द लैंड माने ये सरफेस लेवल ऑफ माने आमर तो इनसिट्यूट केस रे कौन आम गोटे जगार आउ गोटे जगह तो चेंज होना से जगार हम तो सपोज धर जाओ गोटे गोटे लेवल रे प्लांट गुड़ाक रही मैंने गोटे एरिया रे प्लांट रही तो यार लेवलटा केत माने जो लैंड रो जो लेवलिंगटा एलिवेशनटा डिप्रेशनटा एलिवेशनटा केत चेंजेस हम जिते कौन सी फ्लडिंग वाटर आसला से पानी द्वारा ये हम येस कि ना से रिजन रे किसी सब्सिडेंस है आर्थक्वेक एक्टिविटी डिस्ट्रक्शन है से रिजन नॉट ट्रांसपोर्टेशन मन रखता पॉइंटा से पॉइंट रे से कौन हम से प्लांट मटेरियल गुड़ा कौन हम नष्ट हे ब्रेकन डाउन हे डिस्ट्रक्शन हम ना नहीं पुणी तापर कौन हम फ्लडिंग हवा द्वारा वाटर आसला सी कौन हम धीरे धीरे बरीड हे लेयर बाय लेयर ना नहीं पुणी जो सी बरीड होगी ग्राउंड को गला सब सरफेस को पुणी आउ न्यू मटेरियल डेवलप है न्यू प्लांट मटेरियल पुणी से जदि आहरी है लेयर बाय लेयर वो टाइम टेकिंग दिए कोल्डा फॉर्मेशन कौन एत इजी कि सांगे सांगे हो कि बरियल कंडीशन नौ ना लेयर बाय लेयर तो से कौन जे ये मेजर पॉइंट हो शुण पॉइंट गुड़ाक कौन कौन ना द सरफेस लेवल ऑफ द लैंड आर नेसेसरी बुझिपार तो चेंज ऑफ द सरफेस लेवल ऑफ द लैंड आर नेसेसरी हाँ से कथा कह शुण मैंने जिनसा हूँ कौन प्रथम पॉइंट है यहाँ जेहेतु इनसीट आम कही धर जाओ गोटे एरिया प्लांट मटेरियल गुड़ाक माने वेदरिंग स्टोर्म एक्टिविटी है डिस्ट्रक्शन है एंड दैट प्लांट मटेरियलटा अलग जगह आसी डिपोजिट है सीटा अलग केस ड्रिफ्टेड केस इनसीट्यूट केस कौन जब धर जाओ सपोज गोटे लेवल रे प्लांट मटेरियल गुड़ा रही आमर कोल फर्मा कारण कौन जी बरीड हवा दरकार बरीड केत हम गोटे मटेरियल बरीड केत हम भितर बरीड मैंने भितर जीव बुझे केत हम आइदर सब्सिडेंस कौन सी डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी
टेक्टोनिक एक्टिविटी चेंजेस हम तापर टेक्टोनिक नहले ये लेवलटा कमिଯିବ जो लेवल प्लांट मटेरियल बढ़ी से लेवलटा कमिगले पानीर लेवलटा बढ़ीगले से बर्ड कर बर्ड कले सी गोटे लेयर डिपोजिट है पुणी आउ थे प्लांट मटेरियल ताने से जो पानीटा बढ़ी जो रिजन को आसला से रिजनटा कौन होगा कि स्वाम्पी रिजन होगलानी पानीटा सब माने कैचमेंट एरिया भाया पानी गुड़ा सब रहा से सब बुझीपार तो अब मेनली लिखी मेनली फाउंड इन ए ब्रैकिश एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द मैसिव प्लांट ग्रोइंग इन ए स्वैम्प एरिया और शैलो लेक एरिया है तो मैंने लेयर बाय लेयर कंटिन्यूअस बरेड दरकार हमको हम एंड लेवल ऑफ कौन हम सुविला वॉइस वॉइस क्लियर हो नहीं सुविला ना ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଏଇଟା example ଦେଇଛି ଠିକ modern equivalent of a coal formation under the deltaic condition is in the Ganges delta where plant debris is accumulating as a layer of a peat alternating with sediment deposited during the flooding এটা ଗୋଟେ पर्टिकुलर एरिया केस मैंने कहला से ये रीजन रे होई परिबो Ganges delta is deltaic condition deltaic condition is a गोटे तोर कौन गोटे स्वाम्पी एरिया कंडीशन नुह पानीटा सब थाए से वॉइस क्लीयर हो नहीं बुझीपार ना नहीं कौन is an modern equivalent of coal formation under deltaic condition is in the Ganges delta that is बुझला तो एंड व्वेयर जोटे कि प्लांट डेब्रिज आक्युमुलेट थाए सब अल्टरनेटिव से कौन हम जो से गुड़ाक सेमती से रिजन गुड़ाक प्लांट मटेरियल थी एंड से सब प्रोसेस जो बरियाल एक्टिविटी एक्सट्रक्शन प्लांट मटेरियल बरियाल हम पुणी धीरे धीरे न्यू प्लांट मटेरियल गुड़ाक लेयर होते सी जो आक्युमुलेटिंग होते लेयर्स ऑफ पीट अल्टरनेटिव लेयरिंग पीट गुड़ाक डिपोजिट हो पीट गुड़ाक है नहीं then that is the suitable condition for the growth and accumulation of the plant material in this manner have existed throughout most of the geological time during which life on land existed बुझल तो माने से कौन ये जो एरियाटा सुटेबल कंडीशन दैट मीन्स जो डेल्टाइक एरिया
ବା ସ୍ୱାମ୍ପି ଏରିଆ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ डिपोजिट होगापाई एटा हूँ बेटर प्लेस एंड जो प्लेस रे कंटिन्यूअसली लेयर बाय लेयर प्लांट मटेरियल गुड़ाक डिपोजिट हो चलते थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल बुझे तो थ्रू आउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाइज एटा डिपोजिट हो चलते एंड सेटा सेटा एटा कहीं हुए ना जो आमर डिफरेंट कौन हुए एलिवेशन डिप्रेशन सबसिडेंस जो मेटेरियल थिला सेटा डिकम्पोज माने बरिड है पुणी ता उपरे न्यू क्लाइमेटिक चेंजेस आसला तो यहाँ हवा द्वारा कौन हुए से रिजन रे इटा फॉर्मेशन ही चलता फ्रॉम डेवोनियन ऑनवर्ड्स डेवोनियन है यस फ्रॉम डेवोनियन ऑनवर्ड्स थिला तो in situ coal deposits have been formed whenever geological conditions and the time have allowed the full cycle required for their formation. कि हमर मेनली कोल डिपोजिट को टाइम पीरियड रे पाउछ को तमे को टाइम पीरियड रे पाइछ फर्स्ट कोल डिपोजिट पर्म कार्बोनिफेरस तो डेबोनियन पर हेलानी कि पालियोजिक कैम्ब्रियन ओडोविजियन सिल्वियन डेबोनियन तापर कार्बोनिफेरस पर्मियन दैट इज इट इज क्वेश्चन फ्रॉम डेबोनियन टू ऑनवर्ड्स मैंने आम डेबोनियन पर जो कोलटा पाँच से सब कोल गुड़ा पाई दैट इज द इनसिटू कोल डिपोजिट हैव बीन फॉर्म्ड बुझे तो while large vegetable masses large vegetable plant material vegetable masses are widespread all over the world conditions for their preservations are limited a peat deposit may remain uncovered for a long time and may be sooner or later inundated inundated माने कौन inundated weathering erosion transportation yes किसी कौन है से कहूँ पी डिपोजिट मे रिमेन अनकवर्ड माने माने कभर ही नथिला माने लेयर बाय लेयर आ कभर हैनी फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड मे बी किसी तादरो कौन है डेनरेटेड है एंड बरियल अंडर ए कभर सेडिमेंट तामाने बेंतो को हम जो गोंडवाना लैंड पाइथिले एबे प्रूफ कौन देखिले जे बिफोर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग देयर इज ए गोंडवाना लैंड एंड गोंडवाना लैंड रे जो पार्ट थिले माने जो कॉन्टिनेंट गुड़ा सब थिले गोंडवाना लैंड रो जो पांचटा माने गोंडवाना लैंड अंडर से थिले जो पांचटा कॉन्टिनेंट जो थिले एंड से कॉन्टिनेंट रो कॉमन पोजीशन गुड़ाक जोड़ा कॉन्टैक्ट जोन जो कॉन्टिनेंट कॉन्टैक्ट जोन से रीजन रे हमें कोल पाउछे दैट मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम same type of vegetation material which are occur in that continent say you Gondwana land जो continent था yes or no मैं सही पार्ट उड़ा कर कोल उड़ा पाउछ ना बुझिला तो सेटा कहूँ burial under cover of sediments within a reasonable time is essential for effective preservation and this normally means submergence below the water है माने जो प्लांट मटेरियल टाइम बुले से प्लांट मटेरियल गुड़ाक बरियाल एंड प्रिजर्व हेले एंड सबमर्जेन्स हेले बिलो द वाटर द्वारा से सबमर्जेन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज इंस्टिट्यूट कोलफिल्ड रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव ये कौटी तुम कह मत से ट्रांसपोर्टेशन कथा कहला ये जो इंस्टिट्यूट जो पढ़ल कौटी ट्रांसपोर्टेशन कथा कहला required extensive accumulation of vegetation matter which are subject to widespread submergence by sedimentary deposit and the area where coal deposit is to be must be near water level
must be near water level. Submerged when it is submerged by subsidence, submerged in the subsidence द्वारा कौन point to a rise in water level, and the entire area must be covered by a sediment in a reasonable reasonable span of time. हाँ से कहला जे गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं माने जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाइज टू द which gonna when is submerged by a substance or to rise in water level केमती subsidence द्वारा submerge हम ना वाटर लेवल से रीजन में बढ़ी गले माने फ्लडिंग द्वारा वाटर लेवल बढ़ी गले भी से submerge हम entire area must be covered by the sediment in a reasonable span of time and geological time scale wise. If the land surface is to be deformed for growth and accumulation of another peat deposit, the entire area must become silted with sediments. Obviously, गोटे एरिया कौन हम माने लैंड कवर माने प्लांट मटेरियल थिला ताकू अलग लेयर आसी कवर कले माने वाटर लेवल आसी बढ़ीगला सी सिल्टेसन हेनी से पंपेरियल सिल्टेसन मटेरियल रही सिल्ट कंटेंट गुड़ाक सिल्टेड के हुए गोटे रिवर सिल्टेड के हुए वाटर फ्लो है जदि वाटर फ्लो रे जो सेडिमेंट आनी था से डिपोजिट हो गला दैट इज सिल्टेसन तेणुक एटी भी सेमती गोटे लेयर कवर प्लांट मटेरियल अच्छी सी आसला बाहर तो फ्लड प्लांट मटेरियल सिल्टेड कर तो सी डिपोजिट हो चलो से प्लांट मटेरियल गुड़ा प्रिजर्व हो चलिए आक्युमुलेसन हो चलिए तो पीट को फॉर्मेशन करे ना and therefore extensive sedimentation and subsidence देखो यही पॉइंट मेन इंपोर्टेंट दरकार and also आसांगे लगे बरियाल and also geological time ये चार्टा जिनस दरकार गोटे सब सेडिमेंटेशन एक्सटेंसिव सेडिमेंटेशन हम है गोटे सबसिडेंस हम बरियाल हम थ्रू द आउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल must characterize the region बुझल ना and during the large scale in situ coal forming period accumulation of vegetation matter and associated mineral matter generally clay sand is balanced by the substance of the area है एगुड़ा balance in situ case रे कहीं it is not a drifted case बुझल तो ड्रिफ्टेड केस रे कौन ड्रिफ्टेड केस रोची अधिक कंटेंट रहिबो ये किंतु बैलेंस हेकी रोची इनसिटू केस ड्यूरिंग लार्ज इनसिटू कोलाप्स है भितर की ओनली सैंड एंड क्ले मटेरियल गुड़ाक बैलेंस एंड इफ द एरिया इज नियर द सी माने कोस्टल रीजन पाखापाखि है सच एज डेल्टा कोस्टल स्वाम्प एरिया जदि से एरियाटा माने जो एरिया प्लांट वेजिटेशन मटेरियलटा सबमर्ज होची accumulate होची यदि नियर टू कोस्टल थाए and the rate of subsidence exceeds the rate of accumulation and the area sinks below the sea level by the invading the sea covering the deposit with the sand and calcareous mods एठी calcareous सेठी थला silt content रहिला अलग environment एठी calcareous mod गुडा को deposit होउछ बुझिला तो ना माने कहीं ना shallow sea yes shallow sea गुडा कौन हम तुम calcareous content गुडा था ये shallow sea गुडा shallow marine shallow carbonate environment पढ़ न carbonate platform calcareous mud deposit हम कहने डेल्टा ये सब कोस्टल स्वाम्प ये सब कौन माने सी रो पाखापाखि ये सब होता है कौन सी जदि लेवलटा तार लेवलटा कमी गला सी कौन हम सी वाटरटा एंट्री करनी
करियो कि नहीं एंड सी वाटर द्वारा एंट्री करिया द्वारा लिखा है द एरिया सिंक्स बिलो द सी लेवल है नी ताने जदि एरिया सिंक्स बिलो द सी लेवल दैट मीन्स द सी वाटर इनवेडिंग एंड सी वाटर इनवेडिंग करियो माने accumulation of the calcareous mud by accumulation of that sediment which carried by the sea water. Okay, ताले मेन मोटोटा कौन रोची माने गोटे कोल फॉर्मेशन रो मेन मोटोटा कौन अच्छी माने मोर सब कंडीशन रो कहला कोडी कौन माने कौन दरकार मेन ला accumulation प्रथम पॉइंट होची फॉर्मेशन बा ओरिजिन ऑफ द कोल रो फर्स्ट थ्योरी हम जो पढ़चे इन situ थ्योरी प्रथम ला accumulation then preservation then long geological time span एरा भी एते इजी नुहे सांग सांग हवा लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्पैन आ कोन बरियल एक्टिविटी तापर आसला तुमर चेंज इन लेवल ऑफ लैंड एरिया शुड हैव vegetation cover and subsidence पॉइंट गुड़ा जानी पार yes no oxygen environment हवा हाँ टाइप करियो बोरियल हल्ले तो सिटी लेयर बाय लेयर डिपॉजिट or through the entering up by invading of water level by the increasing of water level that means invading of water into that areas by the increasing in level बुझल तो बुझिपारे नहीं समस्ते पॉइंट गुड़ाक जितना पॉइंट ये लिखली से ऊपर एटा सब हो प्रोसेस if the area is inland with a excessive subsidence inland means what is inland land covered है inland land covered है if the area is inland with excessive subsidence है that is gender excessive subsidence the area is flooded by the fresh water and debris is covered with a soil or clay obviously as it saline water कोड आसला आसो कि जदि से रीजन रिभर थी से वाटरटा आसो सी तो पाइबन ना इनलैंड कह दीजिए इनलैंड अच्छी लैंड कवर्ड बारे भितर रहा से रिजनटा जब सबसीडेंस है कौन हम जदि सपोज से रिजन रे भेजिटेस मैंने गोटे इनलैंड बॉडी रहा एंड से सबसीडेंस है तो जदि नियरेस्ट रिभर फ्रेश वाटरटा आसो एंड जदि भेजिटेशन थी से आक्युमुलेट हम धीरे धीरे then when the rate of subsidence and deposition are about equal plant debris continues to accumulate बुझल तो जिते डिपोजिशन एंड मोर सबसीडेंस ही चलो सबसीडेंस एंड डिपोजिशन सबसीडेंस हेल्ले मेटेरियल भितर गला बरियाड है डिपोजिशन है एंड कंटिन्यू टू accumulate डिपोजिट इज सब्सटेंशियली फ्री फ्रॉम एक्सटेनियस मिनरल मैटर ऑब्वियसली फ्री फ्रॉम एक्सटेनियस मिनरल मैटर हेनी कि धरा जाओ ये रिजन रे वेजिटेशनल मैटर रहा सेटा सबसीडेंस है से भितर गला बरियाल है आक्युमुलेट है ये कौन अलग जगह कभर कला जे मिनरल मैटर आसो से लिखनी फ्री फ्रॉम मिनरल मैटर
मिनरल वाटर आसार ना जदि ये एठू ट्रांसपोर्ट होकर अलग जगार मान धरा जाऊ यहाँ कौन सी स्टोर्म एक्टिविटी द्वारा डिस्ट्रक्शन हेले एंड फ्लो ऑफ द वाटर द्वारा मूव करके अलग जगह गले तो से किसी मिनरल मैटर नेले किंतु एटा कौन डायरेक्ट इन दैट पोजिशन डायरेक्ट से डिपोजिट एक्युमुलेशन है तो तेणुक से समस्त कहते इन सिटू कोल्स आर नॉट associated with the other constituents or other mineral matter बुझला तो but in India that means the North Europe and North America coals are mainly in situ coal India रे गुड़ा को कम कौन इंडिया रे एटा नुहे इंडिया गुड़ा सब ड्रिफ्टेड कोल वाला when no subsidence occurs the area rises gradually due to continued growth of the plant life but accumulation of the plant debris ceases due to the rapid decay by the microbial agencies and erosion by the wind and the rain. there जो subsidence न होला गोटेटा केस रे बुझिला तो से कौन हम कंटिन्यू ग्रोथ कर चलिए किसी प्लांट मटेरियल ग्रोथ हेले सी पुणी सेठी ये बरियाल हेले देन पुणी आउ किसी माने आकुमुलेट हो गले प्लांट डेब्रिज गुड़ाक डिके हवा द्वारा देन पुणी आउ थे आउ गोटे लेयर प्लांट मटेरियल है सेमती भी सेटा भी फॉर्म कर तो मैंने सिंपली आम इनसिटू रीजन आम कौन पाइले गोटे सबसिडेंस सबसिडेंस subsidence in the inland areas and subsidence also nearer to the coastal region also सेठी भी हो सबसिडेंस हो पार ना सी लेवल बढ़ी भी आसपर सी लेवल बढ़ीगला तो से रिजनटा तौक मैंने डाउन कला कहीं सी लेवल एंटर कर कहीं बाहर वाटरटा भी ब्राकिज एंड फ्रेश वाटर बोथ आर मैंने रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोल से मैंने भी आसिक प्लांट मटेरियल को सबमर्ज कराती है सबसिडेंस गोटे सबमर्जिंग आ गोटे तुम कौन बरियल एक्टिविटी आ कौन देन डिपोजिशन गोटे इन दैट केस टेम्परेचर कंडीशनटा कौन होता दरकार फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोल व्हाट इज द टेम्परेचर कंडीशन नो एटा हाई कही परियोनी एटा भूर हम क्वेश्चन भी पढ़ी जहाँ देख जदि आ माने जदि आम कंपेयर करवा जे फॉर्मेशन ऑफ द कोल दैट मीन्स द बरियल एक्टिविटी फॉर्मेशन ऑफ द कोल कौन बरियल एक्टिविटी कंपेयर करवा विथ द मेटामॉर्फिज्म दैट मीन्स द टेम्परेचर इज लो यस और नो यस और नो ओके जदि कंपेयर करवा एंड आमर मैग्मेटिक कंडीशन ऑल्सो टेम्परेचर इज लो बरियल कंडीशन किंतु कंपेयर करें जदि गोटे सेडिमेंटरी रॉक जो वेदरिंग इरोजन है डिपोजिशन हो जो सेडिमेंटरी रॉक फॉर्म हो एंड ये जो बरियल कंडीशन जो कोल सेडिमेंटरी रॉकटा फॉर्म है से कंडीशन रे बरियलटा टिके अधिक हो पारे किंतु कंपेयर टू द मेटामॉर्फिक कंडीशन इट इज वेरी लो दैट मीन्स इट लो धरा जाए लो टेम्परेचर धरा जाए सेडिमेंटरी केस रे हाई बुझिपार तो ताने सिंपली है जदि आम गोटे एरिया लैंड कवर्ड वेजिटेशन अच्छी सेटा सबसिडेंस हवा द्वारा लेवल ऑफ दैट लैंड also changing due to the invading of a different fresh and brackish water from outside to the area likewise any land vegetation area which is nearer to the sea coastal region due to the invading of the coast माने sea water due to the sea level changes the calcareous mods got deposited and accumulating the plant vegetation material by layer बुझला तो it also and it cannot be transported transport हेनी to the different to the distance so that the mineral matter content is very less in the in situ gold
बुझल तो फ्री फ्रॉम इन लिखलानी फ्री फ्रॉम अदर कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा मिनरल मैटर then ଆସିଲା बेले drifted theory that is drifted theory of the cafe এটা হলো drifted theory drifted theory টা কোন drift material forming the core drift material মানে transported weather material denominated material drift material which forming a core consists mainly of land plants transported by a fresh and a seawater which point am which नहीं एमाने ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर फ्लो ऑफ वाटर ମାନେ ତା ମାନେ କ'ଣ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ ट्रांसपोर्ट हेले थ्रू द सी वाटर और जहाँ भी से कौच ड्रिफ्ट मटेरियल फॉर्मिंग कोल कंसिस्ट मेनली ऑफ लैंड प्लांट जो लैंड मटेरियल गुड़ा which is transported by a fresh or sea water and those transported by a fresh water would not generally travel far but would be transported by the flood during heavy rain from nearby forest and deposited in basins or lake when flood velocity is reduced. बुझिपाल तो पॉइंट कहया कथा जे यदि जोगुड़ाक ड्यूरिंग द फ्लड टाइम रे मूव करेंगे कौन सी वेजिटेटेड लैंड एरिया रु वेजिटेशन मटेरियल गुड़ाक मूव करेंगे ड्यूरिंग द फ्लड एक्टिविटी बिकॉज ड्यूरिंग द फ्लड एक्टिविटी द वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज also high and that material got transported to a what transport of sediment गुड़ाक to a any depressed area हाँ कि फ्लोटा सब कड़ा हुई डिप्रेस्ड एरिया को बेसिन रिजन आड़ तो से आड़ मुव करला जिते भेलोसीटी कौन हम से डिपोजिट के हम जो भेलोसीटी कमिज से नियर बाय से कौन लिखी नियर बाय फॉरेस्ट एंड डिपोजिटेड इन द बेसिन और लेक व्हेन फ्लड वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बुझिपाल तो पॉइंटा तुम सेमिस्टर यहाँ पढ़ा सेमिस्टर जो कॉलेज एग्जाम सरी प्राय बोधे यार एग्जाम सरी न internal set how then flows transported a fresh water कहली बोधे यहाँ हाँ कहली then such lakes and basins may contain much plant debris ताने कौन इनकी कंटिन्यूस आसुथो बहुत प्लांट डेब्रिज ये कला एंड ग्रोइंग इन situ which will form gold deposit of mixed origin or or the drifted material may be deposited in places where vegetation had not previously accumulated forming a purely drift deposit बुझिपाल तो माने ये जो ड्रिफ्टेड मटेरियल आसला माने सेठी कि सेडिमेंट थे ना थे लेक रे नथिए कि जो आर्लियर जो लेक रे बेसिन रे थे तो से ये जो प्लांट मटेरियल आसला सेडिमेंट आनला ये कौन करिवो ये सेठी बढ़ियो एंड सेठी आकुमुलेट हो चलो दैट इज से डिपोजिटा से स्टार्ट हम कौटी मोर जो न्यू हाँ मिक्स होगा सेडिमेंट गुड़ाक तो से रिजन में डिपोजिट हो चलो तो से ड्रिफ्टेड मटेरियल कैरिड बाय द सी मे ट्रैवल फार ऑब्वियसली सी द्वारा ट्रैवल कर फार डिस्टेंस ट्रैवल करिवो एंड
during the heavy rainfall flood time रे जदि ट्रावेल कला ट्रावेल करिवो बुझि परछ रे ट्रावेल करिवो ग्रेटर डिस्टेंस बट सी रीजन रे अधिक डिस्टेंस कवर कर परिवो देयर आल्सो सम drift material may be deposited upon material growing and accumulating as a peat deposit resulting in mixed deposit obviously deposit resulting in mixed deposit କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ growing and accumulating different thing ହେଇଗଲା ନା growing ଗୋଟେ ଥିଲା broken down then transported through the different water bodies like a sea water or flooding water then accumulation in a different lake and basin or any depressed areas ବୁଝିଲା ତ then deposition ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା ଆମେ ତ ପଢ଼ିଛ ଅଟକଥନ ସାଲକଥନ ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ ଅଟକଥନସଟା କହିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲରେ ପଢ଼ିଛ थ्रस्ट सीटा जो मूव करे पाराटकथनस अटकथनस सालकथनस पढ़ुनथिल अटकथनस जो जी वेरी क्लोज दैट मीन्स इनसिटु ताକୁ କୁହାଯିବ ନାଇଁ କି इनसिटु କୁହାଯିବ ଯୋଉଠି ସେଇଠି डिस्टेंस कवर करनी द मेन ऑरिजिन ରୁ ସେ मूव କରିନି ହେଲା द पार्ट ऑफ द सीट माने थ्रस्ट सीट which is not transported from its original position तेल ओरिजिनल पोजिशन चेंज हो डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कर आलोकथनस ऑल्सो इन लाइमस्टोन क्लासिफिकेशन पढ़ी दैट इज आलोकेम एंड अर्थोकेम पढ़ी अर्थोकेमिकल कन्स्टिट्यूएंट एंड आलोकेमिकल कन्स्टिट्यूएंट सेम सिचुएशन हियर सेटा भी अर्थोकेमिकल कौन आलोकेमिकल देन आलोकथनस पोर्शन ऑफ द डिपोजिट differs from the autochthonous not only in the nature of organic component but also the nature of proportion of inorganic constituent inorganic constituent माने कागु से बुझेला मते को कागु से बुझेला से कहला जे ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट देखो कोलटा गोटे कोन ऑर्गेनिक कंपोनेंट रही छी ना नहीं कोल रे ऑर्गेनिक कंपोनेंट रही छी ना नहीं प्लांट मटेरियल टा एक्युमुलेट होबा द्वारा जो कोल फॉर्म कोन को ऑर्गेनिक रिच सॉइल तो प्लांट मटेरियल रो काम एट रही ताने प्लांट मटेरियल तो गोटे जगह ट्रांसपोर्ट होगी आसी डिपोजिट हेले जोटा एटा होची ऑन द बेसिस ऑफ इनसिटू ऑफ ड्रिफ्ट टेक्निक होची से को जे आल्सो प्रपोर्शन ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट रही इनऑर्गेनिक कंटेंट माने किए दैट इज मिनरल मैटर बुझबेले तो पॉइंट टा देन invariably finely divided portion of organic material from large proportion of drift material often associated with the fine clay and silt no ये जो क्ले सिल्ट सेडिमेंट प्लांट मटेरियल जो मूव करूँ ता संगे अदर ड्रिफ्टेड मटेरियल भी आसती एंड दिस ड्रिफ्ट मटेरियल फॉर्म बैंड्स और पॉकेट्स और हाई ash material mineral material in the coal deposit and have widely different properties from that of the associated material which is formed from more massive portion of the plant debris and are free from extraneous inorganic matter. Coal deposit have a widely different properties from that of the associated material. इन सिटू केस रे हुए कौन हुए ना जो बैंड्स एंड पॉकेट्स टाइप डिपोजिट हो जाए प्योर मटेरियल गुड़ाक आउ इम्प्योर मटेरियल बेले बेले मिनरल मैटर गुड़ाक भी अलग कर रही इनसिटू केस रे प्योर था डिपोजिट होनी बोली एंड ड्रिफ्टेड केस रे किछिटा अमाउंट मिसिकी रही था किछिटा अलग अलग भी रही था Indian coals are almost entirely of drift origin. कही छे पॉइंट कही ना नहीं and two main coal forming period in Indian peninsula एटा भी कही सारी
दुईटा मेन पीरियड गंडुआना पीरियड जोटा कि पर्व कार्बोनिफेरस इन व्हिच डिपोजिट आर फ्रेश वाटर ऑरिजिन accumulating in four great basins और कही सारी बेसिन कौन बेसिन कह सारी ये जो गोंडवाना पीरियड पर्म कार्बोनिफेरस यस दैट इज महानदी प्रणीता गोदावरी पढ़े नी सोन नर्मदा वैली पढ़ाई ना नहीं दामोदर सोन नर्मदा दामोदर महानदी प्रणीता गोदावरी से गुड़ा जे इंडिया जो कोर गुड़ाक दीज आर मेनली ड्रिफ्टेड ऑरिजिन एंड इंडिया हैविंग टू पीरियड ऑफ कोल डिपोजिट वन इज गोंडवाना पीरियड अदर इज टर्शियरी पीरियड गोंडवाना पीरियड मेनली पर्म कार्बोनिफेरस टाइम स्केल जोटा डिपोजिट एंड एगुड़ा चारिटा भैली रीजन ग्रेट बेसिन रीजन जोटा कि महानदी प्रणीता गोदावरी सोन नर्मदा एंड दामोदर वैली है देन लोअर इयर्स जोटा ए कौन माने आमर टर्शियरी कथा जो कहती टर्शियरी सेना जो जाऊनी POMP खाली गोटे एग्जांपल दे दीजिए लाकी स्टेज एओसिन अंडर having a Punjab salt range रास देन बालूचिस्तान ये सब नहीं आमर एड़ा नहीं एड़ा कटि जाइए वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कुछ हाँ आम पार्ट गुड़ा लिखा तो ऑलरेडी मुझे तुमको कही पॉइंट गुड़ाक क्लासिफिकेशन आम कर सारी है पिट लिग्नाइट बिटवीन आंथ्रासाइट कर सारी ना तो आहरी डिटेली कर देख केमती प्लांट वेजिटेशन मटेरियल देन स्वाम्पी एरियाज वाटर बॉडीज लगी रही जानीपार तो एटा भी देख ये मॉडर्न स्वाम्प देखो लेयर बाय लेयर डिपोजिट हो मिनरल मैटर कोल लेयर जो ब्लैक कलर लेयर कोल लेयर है मॉडर्न पिट डिपोजिट क्वालिफिकेशन फुल टाइप्स छाड़ यहाँ नहीं यहाँ खाली देख यहाँ तो कही कोलटा यहाँ कही लाभ पॉइंट देख On the basis of the physical and chemical properties of the coal, it can be divided into several characteristics and classes. And bodies actually physical chemical properties. Proximate ultimate analysis physical chemical properties. In a classification based on the proportion of a carbon present, the greater the carbon proportion, higher the rank. The means anthracite having the higher greater carbon content. Fixed carbon content. What fixed carbon. Calorific value, fixed carbon, 3 point से कहूँ term rank is thus an indicator of the chemical development of the coal माने that means गोटे rank टा माने pit lignite bituminous anthracite जो rank टा define करे it is the indication लिखा है it is an indication of कौन गोटे coal रो chemical property देखो कहीं आमे rank टा high कहूँ बोली आमे हेटी proximate analysis chemical analysis कर देले that means से कोल रे कार्बन कंटेंट इज वेरी हाई से कोल रे हाइड्रोजन कंटेंट इज वेरी लेस से कोल रे ऑक्सीजन कंटेंट इज वेरी लेस ये सर नो पढ़ले नहीं गुड़ा एलिमेंट एनालिसिस कले प्रोजेक्ट इंक्रीज इन रैंक denotes the natural process due to which carbon content of the coal increased and rank of the coal increase कले carbon content increase at the expense of hydrogen and oxygen content yes no then it may be noted that the difference in the rank various coals do not necessarily signify difference in the geological age and apparent difference in rank मैंने गोटे रैंक ऑफ द कोल है आम जियोलॉजिकल एज कहबानी डिफरेन्स सेमती किसी हुए से डिपेंड करे कंपोज लिखाई से डिपेंड करे कार्बन हाइड्रोजन रेशियो आम ना कहीपर एजटा भल यही टाइम स्केल एज जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाइज यही एज्रे आमर आंथ्रासाइट गोल अधिक मिले हाँ हेटा आम पर इंटरप्रिट करुचे एज यही रिजन में मिलूँ बोली नट कि जे टाइम स्केल कार्बन ऑक्सीजन
may be due to the presence of different proportion and types of chemical compounds in the coal ହେଲା ସେଇଟା ସିମ୍ପଲି କହିଲେ ଯେ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ କୋଲ୍ ୱାଇଜ୍ରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ କହିଲା କାର୍ବନ ଯେଉଁଟାକି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରେ ହେଲା ଏଇଠି ସବୁ ଦେଇଛି କେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଫର୍ମ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ କାର୍ବନ ଏଇଟା କହିସାରିଛେ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ କହିଛି ନା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ଡିକ୍ରିଜ୍ କିଏ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବୋଲି then decrease in hydrogen content पढ़ी जाए at first gradually until carbon reaches the 89% and the more rapidly then decrease in proportion of a volatile matter एटा भी कह सकती कही ना नहीं volatile matter moisture content सब decrease करियो then increase in calorific value कह सकती कही ना नहीं then decrease in moisture content एटा भी कही then increase in absolute density obviously है then decrease in solubility in alkaline solution এটা কইনি alkaline माने decrease in solubility alkaline माने alkaline solution जदि higher rank कोल को हमें पकेबा ताले एटा हबनी decrease करिजो increase in depth of color luster and reflectivity एटा ठीक अछि obviously color vary करियो then decrease in reactivity towards the oxidizing or hydrogenating agent obviously कहीं oxidizing property टा आम केतबे पाइबा जेतबे गोटे कोल रो प्योर भेराइट नथियो yes or no कहीं oxidizing property टा तो कमी जीवो ना माने जेते हायर रैंक कोल को आम जीवा ऑक्सीजन प्रेजेंस से कमी जीवो जेते लो रैंक को थिबा एटा इम्प्योर भेराइट एटा ऑक्सीडाइजिंग हे परिबो এইটা হচ্ছে পিলে বহুত ইম্পর্টাট এই প্রপর্টি এটা পরে এমএসরে দরকার হব ঠিক তো এটা হচ্ছে পুরা জিস্ট পয়েন্ট গুড়া লেখা হয়েছে সব মেন পয়েন্ট গুড়া এটা তুমি পড়িছ এটা পড়ুনি আর থরে এই র্যাঙ্ক যেটা রিপিট লিখনারে পড়িছ এটা পড়ুনি আর অরিজিন ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ହଁ ଅରିଜିନ ପ୍ରୋସେସଟା ଅଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିକି କହିଦେବି ହେଲା ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆଜି ହେଲା ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହାରିବି